Amit Dubey. Sir, thank you so much for joining us here on CNN News 18. Sir, if I can come to you to ask you for more of an explanation, and if you could really break down for us, because we have given our audiences a brief explanation, but I think you as an expert could do perhaps a better job of explaining to us how foreign countries, for example China in this case, how they get involved, and explain to us the background infrastructure that's going on there behind the building of one of these apps. So Toya, first of all, I would like to explain the severity of the situation, because in last 1.5 years almost, I received more than 200 complaints from different people, including from my society and neighbors and everywhere. That means this is a very, very rapidly spreading issue, which is because people are getting threatened, extorted, and then they get into depression and all. This is really happening. So we need to understand first the severity of it. We had a couple of discussions in Ministry of Home Affairs also about this issue. And this has multiple stakeholders. When this is organized, it is not only the app or the NBFC part of it. It is actually the way the money is coming from China to India and going out. This entire process is actually exploiting many loopholes of economic system. So we need to fix those loopholes also. First of all, the way it is coming through shell accounts, as you have already mentioned. There are multiple companies opened. When we were investigating this case, we found a single address was used to open more than 600 companies, and that has been happening because of some loopholes in the system. How could it happen? Then SIM cards. Many of these SIM cards are not verified well, because these are on some people, those are not aware that the SIM cards are taken on their names, either from Odisha, West Bengal and different other places, and that is something which is also happening smoothly. Thousands and thousands of SIM cards are provided to these people, and then they use VPN. So VPN becomes one more blocking point for us, where they can actually spoof their IP. They can relocate themselves to any other part of the world while they are working from India. And then to trace them is very, very difficult, because WhatsApp does not give us, other than IP, they don't share any other details with us. And that is the biggest challenge. So having multiple stakeholders involved in this particular crime modus operandi, we need to fix it at multiple places. We cannot just create awareness, but we need to also fix those loopholes in the economic system which allows them to bring this money back and getting it out without any supervision, without any regulation. I think this is the biggest challenge right now. Okay, Mr. Dubey, I then want to ask you two questions, because you've said that part of this issue is deeper. There is IT infrastructure, as you're talking about there, that needs to be built up, that needs to be ramped up. If you could, for our audiences, illustrate who are the organizations that need to do this? What would that effort look like? How much time would it take? And then if you could also tell us what ordinary citizens could do. I think my colleague Swastika right now said it is partly as simple as just, don't take loans from apps. But if there's more that you think citizens could do here also, if we could have your answer on both fronts. See, first of all, from legality perspective, RBI is very clear that these they have already given a list of 600 applications lately, and all these were banned. But they have also instructed Google to remove these applications. But there are multiple other channels through which these applications are promoted among public, through Telegram channels, through Instagram, through Facebook. So there are multiple ways through which they can reach out to them while sending direct link. These are not Play Store link, or they are not hosted on the legit Play stores or app stores, but rather they are directly hosted on some Chinese servers or somewhere, and these links are shared across public. They install it, and then their data gets out. The data includes their phone numbers, the pictures and everything, as Swastika has mentioned. And then that is also a data privacy issue. If you know that yesterday only our IT minister has withdrawn the data privacy bill, which was pending and which was really important for these kind of issues to fix it. And that is something which I think which could have helped us to stop these kind of issues. But now, without any data privacy act or law, even if our data is going out, there is no such legal action that we can take against many of these companies, which is actually preventing us. Yes, there are cheating, there are frauds for which the investigation happens, but then we identify many loopholes in the system which is enabling them to do that, and then tracing out the real culprit is very, very difficult. So that is the real challenge that we are facing right now. And as you said rightly, that for example, they have recently also given a guideline for VPNs, that VPN should not be allowed in government sector and other places. But what about common public?
they are also using VPNs, and there are sometimes inbuilt VPNs in these apps. So when you install these apps, you get VPN also installed, and then it becomes very difficult to know the real hostings of these servers. So these are the real technical challenges that I see to actually identify. And then also the prosecutions. We have hardly any serious prosecution which has happened. The people those we have arrested, they are just the hired people. Those are just doing their job because of some money. They are not the real mind masters behind this game. Unless until we reach out to the real people and then prosecute them, this will never be stopped. Every day we get thousands and thousands apps are coming. If you see the Play Store, just type loan and you will have many apps coming out, and those are having 100 downloads, 1000 downloads, which means they have recently been uploaded. And then if you see on Telegram, loan apps or loan itself, you will have many Telegram groups where people are approached with these links and app links, and people are following them. Similarly on Instagram and other such social media platforms. So there are multiple channels. Everywhere this should be blocked. Everywhere these should be removed. And also the people awareness, I think. So multiple ways we need to work to fix it up. And that's why there is a delay. And I'm sure the government is taking few actions which I am aware of, but then this is not that simple, especially for the economic perspective, where the money flow is to be traced. When we were tracing this money, we were surprised to know that this money actually is going out so smoothly with multiple accounts, that even if we are having some tool to monitor the money laundering, we cannot, because they are actually avoiding that entire check process and getting this money out. Okay, so because you've investigated this, I actually want to come back to you in a few minutes and ask you more questions, just to understand more about what your investigative processes look like. But just stay with us for a second, because we also have with us a victim. This is a victim who's suffered from this app, or one app in particular, in Delhi. We're going to try to protect his identity. I'm going to be speaking to him in Hindi. We will translate parts of his conversation in just a second. सर, हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए धन्यवाद. सर, हमें ये जानकारी मिली है कि आपने एक ऐसे ऐप का इस्तेमाल किया है. सर, हम आपसे जान सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस था इस ऐप के साथ? मैम, मैंने पहले वो ऐप डाउनलोड करी, तो उसमें रिक्वायर्ड होता है आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक सेल्फी. तो उसमें ये कंफर्म नहीं होता कि आपको लोन मिलेगा या नहीं. आधार कार्ड पैन कार्ड डालने के बाद 5-10 सेकंड्स का वेटिंग टाइम पीरियड आता है, तो उसी वक्त ही इंस्टेंट लोन नहीं आता. लाइक मैंने फरवरी में एक ऐप से करा था ओबी कैश लोन एंड ऑन स्ट्रीम कैश लोन. तो यहाँ से मैंने करा था. उसके बाद मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड डाउनलोड करा, उसमें अपना सेल्फी अपलोड करा. तो फरवरी 15 को मैंने करा, तो 17 फरवरी को अनोनिमस एंट्रीज मेरे अकाउंट में आई, जो कि उस ऐप से रिलेटेड नहीं थी. उनका नाम भी नहीं था. तो उसके बाद मुझे मैसेज आया कि आपके पास ये लोन आया है, तो आपको 5 दिन में ये रिपे करना है. तो रिपे करने के बाद जैसे 5 डेज़ निकल गए, मैंने कहा कि ऐसे ही होगा. लाइक अनोनिमस एंट्रीज आई हैं, कोई भी मैसेज करता रहता है, 1000 ऑफ मैसेज आते व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट मैसेज पे. तो उन्होंने क्या करा कि फिर धीरे धीरे उन्होंने धमकियों भरे कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप्स मुझे भेजने शुरू कर दिए. तो मैंने तो पहले इतना लाइटली नहीं लिया, मैं हर नंबर को ब्लॉक करता रहा. तो वो धीरे धीरे उन्होंने मेरे फ़ोन बुक का डाटा निकाला, एंड वो मेरे रिलेटिव्स वगैरह को कॉल करने लग गए. उनको धमकाने लग गए कि मोहित ने ऐसे ऐसे लोन ले रखा है, आप नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे. लाइक बहुत ही अब्यूजिंग लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे थे, जो कि अनबियरेबल था मेरे लिए. तो इसी के बीच में मैंने फिर साइबर सेल में भी कंप्लेंट करी. उनको मैंने सारे प्रूफ्स दिखाए. तो उन्होंने देखा, ट्रैक किया, तो वो अनट्रेसेबल थे. तो मैंने कहा सर, ये तो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है. अभी रिसेंटली रिकॉर्डिंग मेरे ब्रदर के पास आई थी. उन्होंने बहुत अब्यूजिंग लैंग्वेज मेरे साथ यूज़ करी थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास. तो आई मस्ट से कि ये ऐप्स बंद हो जानी चाहिए, ताकि कोई भी इनके फ्रॉड में ना फंसे और अपना जो भी आइडेंटिटी है वो रिवील ना कर पाए इन पे. वो टोटली बैन होनी चाहिए, परमानेंट ब्लॉक होनी चाहिए. यही मेरा व्यूअर्स के साथ कहना है. सर, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए धन्यवाद. सर, हमारे साथ जुड़े रहिए. मेरी एक कॉलीग हैं, एक संवाददाता हैं हमारी, स्वास्तिका दास, हैदराबाद से. वो भी आपसे 1-2 प्रश्न पूछना चाहती हैं. ओके. स्वास्तिका, गो अहेड. जी.
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हरासमेंट का जो प्रोसेस है इट्स द सेम, लेकिन आप जब पुलिस के पास गए थे पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? वर दे एबल टू क्रैक डाउन ऑन द कॉल सेंटर एजेंट्स एंड द रिकवरी एजेंट्स जो आपको एवं आपके फैमिली को हरास कर रहे थे? सर, आप वो प्रश्न सुन पाए? मैं फिर से रिपीट करूं उनका जो प्रश्न था? Alright, we'll just try to check if we still have the connection with the victim. He is calling us from Delhi, but I can't actually see if he's able to hear us. Sir, आप सुन पा रहे हैं हमें? Alright, for some reason I'm not sure if he's able to hear our audio. Alright, we're going to try to make sure that we are able to actually speak to him. Till then I'm going to go over to Amit Dubey to understand more. Mr. Dubey, thank you for staying with us. Sir, we just heard right now from a victim. I believe you were also able to hear that conversation. And one of the things he said such apps should be banned. Why are these apps being allowed? And I wanted to understand more from you. Is it possible to ban apps, or would it be like a cat chasing a mouse because there are so many apps that keep coming up each day? Could you tell us more? See, technically yes, these can be banned, but practically no, because there are other channels through which people will be approached and they'll use it without knowing that what could be the consequences. And as this victim has mentioned, because he was hesitating to say few things which happened, because I have met with few victims, and they create morphed images of your relatives, of yours, naked images, and they share across, and they threaten like in very vulgar and abusive language to that extent, and they get mentally harassed to that extent that they have no other option but to block these numbers and then to remove these numbers, and this is the only thing which they have in their hand, because when we trace out these criminals, we get VPN IPs, we get IPs from different other countries. So that's why to locate them is very difficult in real time, and then they change their numbers also. So I think technically if we need to ban these apps, yes, RBI has banned 600 apps. They are still identifying these apps and banning it. They are not legit app, they are not legal, because they are not even connected with any NBFC. So the way they are operating here, it's absolutely illegal. But the only way out is to inform Google and other Play Store to ban it, which is happening. If you see right now, many of these apps are already banned, removed. But yes, every now and then the new apps are coming. The names are changed. Same app with the new logo, new names are again installed and again uploaded on different hosting servers, and they keeps on working. So this is not stopping. There's no such practical the solution to this problem unless until we make people aware that yes, you should not use it, because this will be the consequences eventually for you. Okay. So I think just for 2,000, 5,000 rupees loans, they get so much stress in their life. Mr. Dubey, stay with us for just a second, because I believe we've actually also been able to re-establish our connection with the victim. Sir, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. सर, मेरी जो कॉलीग हैं स्वास्तिका, वो आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा था आप लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स के पास गए थे और उनके साथ आपका एक्सपीरियंस रहा था. आप उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें और बता सकते हैं प्लीज? हाँ जी मैम. तो जब मैंने गूगल प्ले से वो एप्स डाउनलोड करी, जब अनोनिमस एंट्रीज आई मेरे पास, तो कुछ टाइम बाद मेरे को कॉल्स वगैरह आई. तो जैसे एक ऐप है सॉल्ट ऐप, तो भी कुछ टाइम पहले मेरे को मेरे रिलेटिव्स के पास कॉल आया कि आप मोहित अरोड़ा को जानते हैं. तो पहले वो टारगेट्स बनाते हैं सारे, जैसे मतलब आपके रिलेशन में होता है, जैसे चाची मामी वगैरह, पहले उनको टारगेट करते हैं वो. तो ऐसा ही मेरी भाभी के पास कॉल गया, तो उन्होंने कहा कि आप मोहित को जानते हैं. तो उन्होंने कहा हाँ. तो उन्होंने कहा कि आप अगर उनका लिंक बताते तो अच्छा है, नहीं तो हम आपके साथ बहुत गलत करेंगे जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और मोहित को जैसे ही हम ढूंढेंगे तो हम उसको ठोक देंगे. ऐसा उनका कहना था ऐप वालों का. वो थर्ड पार्टी एक्सेस एंड प्राइवेट नंबर होते हैं जो कि अनट्रेसेबल होते हैं. तो काफ़ी मतलब मेरे को इस तरह की धमकियाँ मिली, तो जो कि बहुत मेरी इमेज मेरी फैमिली में भी ख़राब हुई, मेरे रिलेटिव्स में भी ख़राब हुई. तो ये जो ऐप्स हैं ये पूरी तरह रिमूव होनी चाहिए और एक लीगल एक्शन इनके अगेंस्ट लेना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर कोई भी इन ऐप्स को यूज़ करे तो
मतलब वो डाउनलोड ही ना हो, इट मीन्स कि गूगल प्ले स्टोर पे आए ना, क्योंकि जैसे मैंने फेस किया है वो अभी तक मेरे लिए मतलब मेरा इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है और इतना मेरे को डर भी लगा है। मतलब फरवरी से अब अगस्त आ गया है, तो तब से लेके अब तक मैंने इतने मतलब केसेस करे हैं और इतना मतलब मैंने अंदर से इतनी इनकी कॉल्स वगैरह सुनी, धमकियों भरी और ये सब, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं था। तो मैं आगे यही कहना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर से कि आप अवेयर हों और कुछ ऐसा कैंपेन, कुछ ऐसा मतलब एक मिशन हो कि सारी की सारी ऐप्स ये हर प्लेटफॉर्म से, iOS से, गूगल प्ले स्टोर से, विंडोज फोन से, सबसे ये रिमूव हो जाए, ताकि कोई भी ये जैसे लोगो चेंज करके या फिर उनका नाम चेंज करके कुछ पैसों के लिए वो आपको हरास करें, और थर्ड पार्टी एक्सेस नंबर जो कि बिना मतलब कॉल्स जिनको मिलती नहीं है, तो वो रिमूव होने चाहिए, वो बैन होने चाहिए। सर एक सेकंड जुड़े रहिए, मेरी कॉलीग स्वास्तिका अब, क्योंकि आप भी हैं वो भी है, वो एक सेकंड आपसे प्रश्न भी पूछेगी। स्वास्तिका गो अहेड। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी जो है लोग काफ़ी अवेयर है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने पर्सनल सिचुएशन की वजह से लोन लेने के लिए फोर्स हो जाते हैं। मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ आपसे कि ये पूरा प्रोसेस जो है आपने कैसे अप्रोच किया लोन एजेंट्स को, पहले उन्होंने कौन सा लिंक भेजा, अगर आप इसे वापस से बोल सकते हैं ताकि आवर व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस चैनल कैन बी अवेयर ऑन व्हाट नॉट टू डू व्हेन इट कम्स टू अप्रोचिंग दीज लोन एप्स। जी, मैं बताता हूँ। इसमें आप ये अपना प्रिकॉशंस रख सकते हैं कि सबसे पहले तो अपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स उस पर ना अपलोड की जाए। हेलो, हाँ जी सर, हम सुन रहे हैं। हाँ जी, तो उसमें कोई अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड किए जाएं जिसकी वजह से कोई उन्हें मिसयूज कर ले। तो कुछ पैसों के लिए, अब ये तो मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि ऑन टाइम रहते हुए मैंने कंप्लेंट्स भी कर दी, अब तो कुछ कम हो गई हैं लेकिन पूरी तरह ये खत्म नहीं हुई, कभी भी ये कॉल्स आ सकती हैं अभी भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें कुछ पैसों के लिए, क्योंकि अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं तो वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो आप कुछ अमाउंट के लिए अपना मतलब मत अपना टाइम वेस्ट करिए और कुछ प्रिकॉशंस लेके अपने आप को सेव करिए, ताकि इन फ्यूचर जैसे मैंने फेस किया है वैसे और हमारे व्यूअर्स फेस कर पाएं। ऑलराइट सर, हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। Swastika, thank you for joining us live from Hyderabad. And sir, Mr. Amit Dubai, thank you so much for providing us with your expertise this morning here on CNN News 18. To our viewers,